Hello everyone, I welcome you all to my channel Revealing Concepts. In today's class, we would be learning the concept of subspace of a vector space. So what exactly we are going to do is, I'll be telling you the definition and the method to prove how a set can be proved as a subspace of a vector space, and then in the next video I would be solving problems using the methods that I would be teaching in this particular video. So let's begin. Subspace का definition, and here I can say कि it would be always a subspace of a vector space. This is like a similar concept कि subset of set जैसे होता है वैसे ही subspace of vector space होता है. So as the definition says, a subspace of a vector space is a subset that is itself a vector space. So वो तो subset तो होता ही है, लेकिन it being a subset, it itself is a vector space under the same operations of vector addition and scalar multiplication. वही same operations होते हैं, the same vector addition and the scalar multiplication which existed in the definition of a vector space. Now here I would like to tell you that I have already explained what a vector space is, and I have already solved a problem with respect to proving that a particular set is a vector space. If you haven't watched it, then please do visit my channel and look up for the first video under the playlist of Linear Algebra. You would get a clear idea of what a vector space is. So here it is said कि अगर कोई भी एक सेट जो होता है वो सबस्पेस कब होता है, वो खुद सबसे पहले उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होना चाहिए. It being a subset, it should also be a vector space under, you could say, the same operations of vector addition and the scalar multiplication. It's as simple as this. लेकिन अभी if ever in exam the question comes that prove that so and so set is a subset of subspace of the set of complex numbers or the set of real numbers, ऐसा अगर question आया, अगर आपको कोई एक specific एक subset दिया होगा complex numbers के set का जिसके ऊपर कोई condition लगाई होगी, तो और if you have been asked and in that you are asked to prove that that particular given set is a subspace of the set of complex numbers, इस चीज को आप prove कैसे करोगे? तो उसके लिए we have got two methods and I'll tell you when to use which method. ये दोनों methods जो है वो ऐसा नहीं है कि you can use any one of them. It would be beneficial for you to use those specific cases or specific methods in the particular set of conditions. तो मैं आपको बताऊंगी वो method क्या है, और I'll explain you the method also, and at the same time I'll tell you when to use which method. So the first method is subspace के conditions. अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें ये प्रूफ करना होता है कि एक पर्टिकुलर सेट एक सबस्पेस है, तो उस केस में कुछ सबस्पेस के कंडीशंस होते हैं, वो हम लोग को प्रूफ करने पड़ते हैं. एंड दोज कंडीशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो वेक्टर शुड बी in the set that you are proving to be a subspace. So now let us assume that I have taken a set of complex numbers और मैंने उसका कोई सबसेट लिया है, तो उसका जो भी सबसेट होगा उसमें सबसे पहले एक जीरो वेक्टर, उसी सेट का जीरो वेक्टर उसमें बिलोंग होना चाहिए. दैट जीरो वेक्टर शुड बिलोंग टू दैट सेट. सो जीरो वेक्टर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज 0 प्लस आयोटा 0. सो दिस 0 प्लस आयोटा 0 शुड बिलोंग टू द सबसेट दैट इज गिवन टू यू. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड इज कि दैट पर्टिकुलर सेट which is given to you should be closed under addition and multiplication. Meaning if you take any two elements from that set and if you try to add them or if you try to multiply them, the resultant should again belong to that particular set which you are trying to prove as a subspace. Now here while writing in exam, we always for understanding purpose denote the set by the letter W. So when I said W, W would be the subspace of the vector set V. So यहाँ पे पहला तो यही दिया है कि जो भी जीरो वेक्टर होगा इट शुड बिलोंग टू W, एंड सेकेंड इज कि दिस सेट W शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. मीनिंग फॉर एनी टू elements of this particular set W, alpha plus beta should belong to W and alpha into beta should belong to W. This is closed under addition, closed under multiplication. तो ये दो conditions है जो हम लोग को prove करने होंगे अगर हम लोग को question आया कि prove that a particular set is a subspace of so and so set. लेकिन अभी ये यूज कब करना है, दिस सबस्पेस कंडीशन वाला मेथड आपको यूज कब करना है? सो सबसे पहले यू कैन यूज इट व्हेन द सेट इज डिफाइंड बाय द कंडीशंस और इक्वेशंस ऑन वेक्टर एंट्रीज. सो कैसा होता है ना कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू कि
you would have a set, let's say W, such that this set would be consisting of a tuple such that you would have x square plus y square equals to 1. ऐसा कुछ condition होगा. Now here just read it carefully. Set is defined by the conditions or equations on the vector entries. ये set जो है ये defined है इस property से, और ये जो property है ये basically ये जो vector entries है इसके ही एलिमेंट्स है. सो समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट अगर कभी भी आता है ना तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर मेथड. नेक्स्ट इज, अगर आपको इफ द क्वेश्चन कम्स prove that the given set is not a subspace. If this type of question comes, it's a pretty straightforward question. If such a question comes, you have to use this subspace conditions वाला method. So first is, जब आपके जो कंडीशन रहती है किसी भी सेट की, इफ दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर एंट्रीज, देन यू हैव टू बेसिकली यूज दिस मेथड. एंड द सेकंड कंडीशन जो है या सेकंड केस जहां पे आप ये यूज कर सकते हैं इज व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट डिसप्रूविंग दैट अ पर्टिकुलर सेट इज अ सबस्पेस. Okay, likewise we have method number 2, which is the method of linear combination. अभी ये मेथड क्या है? So whenever you are supposed to use this method of linear combination, इधर भी दो चीजें हैं वो आपको शो करनी पड़ेगी. The first thing is you have to show that the set that is given to you, which you are supposed to prove as a subspace, should be non-empty. So you should show कि there exists at least one element which belongs to that particular set, and it is always advisable to show the zero element to be the part of that particular set. So यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि जो हम लोग को subspace proof करना है उस वो set जो है वो non-empty शो करना है. And now let's move on to the linear combination part. So what we are going to do is we are going to take two elements from the field. These are the scalars. We are going to take two elements from the सबस्पेस जो बेसिकली वेक्टर सेट होगा. सो दो एलिमेंट स्केलर के हैं, दो एलिमेंट वेक्टर्स के हैं, एंड यू हैव टू शो दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू. और ये जो अरेंजमेंट है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन. ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा शुड बिलोंग टू डब्ल्यू. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू शो दैट डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड सेकेंड इज फॉर टू scalars and two vectors, the linear combination of these four elements should belong to the particular set. तभी ये set W जो है वो एक subspace बन जाता है, and we are naming this method as the method of linear combination. Now when you are going to use this method, so the first case is when the set is defined as the solution set of a linear equation. अगर आपको कोई linear equation दिया है और linear equation तो बाहर दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि दिस पर्टिकुलर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. मार्क माय वर्ड, हियर इट इज गिवन लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सो द सेट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो कोई तो लीनियर इक्वेशन होगा जिसका सोल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस का जो सेट होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा देन यू आर सपोज्ड टू यूज द लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड. द नेक्स्ट केस व्हेन यू कैन यूज दिस मेथड इज वेयर द डेफिनेशन क्लियरली लुक्स लीनियर. जैसे let's say here instead of x square plus y square I am writing x plus y equals to 1. Now here if you see this is linear because there are no powers involved. So whenever the definition clearly looks linear, हम लोग को क्या करना है? यही मेथड यूज करना है. यहाँ पे इफ यू सी देयर इज नो बेसिकली कंडीशन ऑन द लिनियरिटी ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज गिवन, बट हियर इट इज सेड कि डेफिनेशन क्लियरली लीनियर होगा ना, ये जो कंडीशंस है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. एंड फाइनली व्हेन मल्टीपल elements are given to you, not just one, you have too many elements and you will find that particular question to be little complex in nature only. In that case you are going to use method number 2. So we started with the definition of subspace. We saw how simple the definition is. Then we moved on to knowing the methods to prove any particular set as the subspace. उसके अंदर हम लोगों ने दो methods देखे. The first method is the subspace condition वाला method, where you have to show that the zero vector belongs to the set and the set is closed under addition and multiplication. And this can be used when the set is defined by the conditions or equations on the vector entries first, and when the question is that you're disproving a set is a subspace. And second method हमारा linear combination
इक्वेशन वाला मेथड था जिसमें सबसे पहले आपको प्रूव करना है दैट द सेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड टू स्केलर्स बिलोंग टू द सेट W। और ये केस जो है वो हमें कब कब यूज करना है? सबसे पहले when the set is defined as the solution set of a linear equation. Second is when the definition is clearly linear, you can use this particular method. And third is when multiple elements are given to you. So that's all for today, and I hope you have understood what has been taught in today's video. We would be solving problems based on this concept in the next video. If you have any doubt with respect to the conceptual understanding of this part, you can post your comments in the doubts in the comment section and reach out to me. I will surely reply back to you. Thank you so much and see you soon in the next video.